गाइस, दिस इज़ फरहत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ, दामिनी गज्जर इंस्पायर्ड मेकअप लुक। मैंने कोशिश किया है उनकी तरह लुक क्रिएट करने का। मैं उनकी तरह तो बिल्कुल भी बनना नहीं चाहती, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हो सकती। शी इज़ सो प्रिटी, बट या इंस्पायर्ड इज़ समथिंग अबाउट, अगर आप किसी चीज़ को देख के आपको पसंद आता है, आप वो अचीव करना चाहते हो, सो आप उससे इंस्पायर्ड होते हो, आप खुद पे ट्राई करते हो। सो मैंने ट्राई किया एंड आई हैव अचीव्ड दिस लुक। आई होप अच्छा होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ये बहुत ही इजी सा ट्यूटोरियल है, हर कोई कर सकता है, बिगनर फ्रेंडली है। एंड अगर आप बोल्ड लुक में जाना चाहते हो, सो दिस इज़ ऑसम। सो या, तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आई हैव ऑलरेडी डन माई स्किन केयर, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ग्लो बूस्टर प्राइमर लिया है। सो ये प्राइमर के साथ साथ आपको बहुत ही नेचुरल ग्लो देगा, लाइक यू नो काइंड ऑफ इल्यूमिनेटर। सो आई एम यूजिंग दिस एंड आपको नेचुरल ग्लो देता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। व्हाट एल्स यू वांट? तो इसे मैंने अपने टी जोन पे लगाया जहाँ मुझे ज़्यादा स्वेटिंग आती है, एंड देन इसे मैंने ऑल ओवर फेस भी अप्लाई किया है ना, स्प्रेड, सो दैट आपको बहुत ही अच्छा ग्लो आए। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस एनबॉय का फाउंडेशन। सो ये एक शेड लाइटर है मेरे स्किन टोन से, तो इसे मैं अपने वो कैलियर फाउंडेशन से मिक्स करके इसे अप्लाई करूँगी, काइंड ऑफ हैक यू नो। तो इसका शेड है नेचुरल 04 नेचुरल एंड इसका शेड है लिली सॉफ्ट बीच इनोसेंस 1, जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है purple.com से, बट यू नो एक शेड लाइटर आ गया है। सो या, आई विल सजेस्ट यू टू बाई फाउंडेशन फ्रॉम मार्केट, सो दैट आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से आपसे मैच करके यू नो परचेज कर सकते हो ना। दिस इज़ द परफेक्ट शेड फॉर माई स्किन। इसे अपने नेक एरिया में भी अच्छे तरीके से लगा लेना है ताकि इवन सा लगे, अनइवन ना लगे। जस्ट इन अ टैपिंग मोशन आप इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लो। अच्छे तरीके से आपको अपने नेक एरिया में भी ब्लेंड करना है, देन ईयर्स पे भी आप यू नो अच्छे से ब्लेंड कर लो, सो दैट जो ऑल ओवर फेस है आपका इवन लगे, सेम लगे। मेरा स्किन काफ़ी ग्लो कर रहा है एंड इट्स जस्ट बिकॉज मैंने वो जो प्राइमर लगाया था मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड अफोर्डेबल रेंज आपको काफ़ी अच्छा यू नो प्राइमर मिल रहा है। प्राइमर के साथ साथ आपको काइंड ऑफ इल्यूमिनेटिंग क्रीम मिल रहा है, अलग से आपको लेना नहीं हो, यू कैन सी द ग्लो। सो इससे सो या, ये टूट चुका है एंड ये मेरा डफे तोड़ा है। सो या, तो कंसीलर से मैं अपने आईज को प्राइम कर लूँगी एंड देन अपने यू नो स्पेसिफिक एरियाज़ को हाईलाइट भी कर लूँगी। तो now I am highlighting my bridge of the nose, forehead, a little bit dark spots I do have here. कंसीलर को सेट करने के लिए ताकि क्रीज ना आए, मैंने यहाँ पे लैक्मे का रोज पाउडर लिया है एंड इट्स पाउडर।
एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए मैं वहाँ पे पाउडर लगाने वाली हूँ एंड आई विल कीप इट फॉर 3 मिनट्स। तो ये बेक हो जाएगा। So for eyebrows I'm using this हल्का सा brown सा shade for my eyebrows with this angular brush, flat angular brush.
दिस इज़ माई फाइनल मेकअप लुक, यू कैन सी इट। सो ओके, तो काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है उनकी तरह लुक क्रिएट करने का, स्पेशली द आई मेकअप जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड किया था। मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी इस लुक से, इस आई लुक से, जो काफ़ी बोल्ड है, रेड लिपस्टिक एंड ब्लू आईज, जो काफ़ी बोल्ड लुक है एंड बहुत ही इजी पीजी सा ट्यूटोरियल था। सो मैंने सोचा कि या एंड इट्स अ काइंड ऑफ ब्लू मोनोटोन, जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी, तो उसका फर्स्ट लुक है ये। सो या यू कैन सी इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक एंड शेयर करो गाइज, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। टिल देन टेक केयर, बाय।